गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन इंडिया। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कुछ मेजर्स, कैसे इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको जो 100 बिलियन से लेकर हम 500 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा सकते हैं 2030 तक। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अगर इंडिया में देखें तो इसमें प्राइमरीली हमारी फाइनल असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होता है, और बहुत सारे ब्रांड्स और डिज़ाइन फर्म्स जो हैं वो धीरे धीरे आउटसोर्सिंग करने शुरू कर चुके हैं असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग टास्क जो है कंपनीज़ को इंडिया में। तो इकोसिस्टम जो डिज़ाइन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का है वो अभी नेसेंट स्टेज पे है, वो अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुई है उसकी। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो इंडिया का है उसने रैपिड ग्रोथ सी की है और 155 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। प्रोडक्शन नियरली डबल हो चुकी है 2017 से अगर हम कंपैरिजन करें, खासकर मोबाइल फ़ोन्स जो कि 43% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इंडिया जो है सिग्निफिकेंटली अपनी रिलायंस ऑन स्मार्टफोन इंपोर्ट्स कर चुका है ऑलरेडी। लगभग 99% अपने जो मोबाइल फ़ोन्स की नीड है वो इंडिया में खुद ही जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जाती है। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अगर हम देखें तो वो डोमिनेटेड है बाय कंट्रीज़ लाइक चाइना, ताइवान, यूएस, साउथ कोरिया, वियतनाम और मलेशिया। इंडिया करंटली एक्सपोर्ट करता है $25 बिलियन एनुअली का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, जो कि सिर्फ 1% ऑफ ग्लोबल शेयर है। 100% एफडीआई गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है ऑटोमेटिक राउट में। पीएलआई स्कीम्स निकाली हुई हैं, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम निकाला है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे हाई इंपोर्ट टैरिफ्स हैं। अगर हम देखें तो उससे जो है इनपुट पार्ट्स महंगे हो जाते हैं। इकोसिस्टम जो है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का, जैसे सेमीकंडक्टर्स, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। लैक ऑफ एक्सेस टू ग्लोबल डिमांड है अभी। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इंडिया में, जो कि अगर हम देखें तो फाइनेंसिंग की कॉस्ट महंगी पड़ती है फिर कंपनीज़ को। आर एंड डी और डिज़ाइन इकोसिस्टम की भी कमी है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया को एम रखना चाहिए कि 500 बिलियन डॉलर्स तक की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकें 2030 तक। और उसमें कहा है कि उससे लगभग 6 मिलियन पीपल को अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अगर हम कुछ ना करें, बिजनेस एज यूजुअल भी रखें, तो भी प्रोजेक्शंस कह रहे हैं कि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 278 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। ठीक है। तो रिपोर्ट ने कहा है कि स्केल अप करो प्रोडक्शन एस्टैब्लिश सेगमेंट्स में, जैसे मोबाइल फ़ोन्स या फिर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में अपना फुट होल्ड बनाओ। लोकलाइज करो हाईटेक कंपोनेंट्स को। फिजिकल सपोर्ट दो डिज़ाइन फोकस्ड कंपनीज़ को। एक्सेस टू स्किल लेबर पहुंचाओ। ठीक है। एक मैकेनिज्म दो फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स का। ओके। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एक्शंस अगेंस्ट ड्रग्स सिंडिकेट्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 7th एपेक्स लेवल मीटिंग एनकॉर्ड की चेयर करते हुए यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि रुथलेस एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग सिंडिकेट्स के अगेंस्ट। तो मिनिस्टर जो है उन्होंने एक टोल फ्री हेल्पलाइन मानस भी जो है लॉन्च की है। तो एनकॉर्ड क्या है? 2016 में एक मैकेनिज्म बनाया गया बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए स्टेट्स और होम मिनिस्ट्री के बीच में, और इसको 4 ईयर स्ट्रक्चर बना दिया गया 2019 में। एनकॉर्ड को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि कोऑर्डिनेशन एनहांस किया जा सके अमंग वेरियस सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज, और ये डिज़ाइन किया गया है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके बेटर कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो एपेक्स लेवल पर बॉडी है वो होम सेक्रेटरी चेयर करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर है वो स्पेशल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के करते हैं चेयर। स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेटरीज हेड करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हेड करते हैं। तो 4 ईयर स्ट्रक्चर है ये। तो गवर्नमेंट ने फाइट अगेंस्ट ड्रग मैनेज कैसे किया है? तो नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस निकाली हुई है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। और एग्जिस्टिंग लॉज जो डील कर रहे हैं वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इंडिया जो है वो नारकोटिक्स ड्रग कन्वेंशन का भी जो है वो सिग्नेटरी है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स का भी सिग्नेटरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी इन्वॉल्व है अल्कोहल और ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसीज़ बनाने में। डुअल यूज़ ड्रग्स को रोकने के लिए एक परमानेंट
इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी भी फॉर्म की गई है। एनकॉर्ड पोर्टल भी जो है वो काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर। एक टोल फ्री हेल्पलाइन अभी लॉन्च की गई है मानस नाम से। तो गवर्नमेंट का एम है कि एक ड्रग फ्री इंडिया दिया जा सके 2047 तक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इन मेज। टॉपिक इकोनॉमी इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है ग्रीन रेवोल्यूशन इन मेज, जो कि ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर है, वो बहुत ही उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। तो उससे हमने क्या किया है कि मेज़ प्रोडक्शन सिर्फ 20 साल के अंदर ट्रिपल कर ली है। तो पहले तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो हिस्ट्री देखें अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो 1960s में आया था, जब हाई यील्डिंग राइस और वीट इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। ये एक ऐसा पीरियड था जब एग्रीकल्चर जो है इंडिया में कन्वर्ट किया जा रहा था मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम में बाय अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कैसे किया जा रहा था? यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। मेनली ये एम एस स्वामीनाथन द्वारा जो है वो लेड था। ठीक है। तो क्रॉप वैरायटीज़ जो है वो चूज़ की जा रही थी। जो है इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि क्रॉप वैरायटीज़ जो है वो ब्रीडिंग की चूज़ की गई बेनिफिशियल ट्रेड्स का इस्तेमाल करते का देखते हुए। ठीक है, क्योंकि हम जो है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स लेकर आ रहे थे, तो उससे हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीज़ देखने को मिला। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि स्मॉल फार्मर्स जो है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी, तो स्मॉल फार्मर्स जो है वो डेट में चले गए। इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होने की वजह से। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ ही एरियाज़ में जो है वो प्रेवलेंट था, तो उससे रीजनल डिस्पैरिटीज़ आई। लार्जली ये वीट और राइस के क्रॉप्स में ही लिमिटेड रहा। मेज़ में अगर हम देखें तो प्रिंसिपली दो सीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है, खरीफ और रबी सीज़न में। खरीफ लगभग 83% ऑफ मेज़ एरिया जो है खरीफ सीज़न में ही जो है वो कवर करता है। और इंडिया का 4th रैंक है मेज़ प्रोडक्शन में, 7th है आई एम सॉरी, इंडिया का 4th रैंक है एरिया में और 7th है प्रोडक्शन में मेज़ के कंटेक्स्ट में। और एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मेज़ हमने पिछले 20 साल में ट्रिपल कर ली है। मेज़ एक फ्यूल क्रॉप की तरह ज़्यादा यूज़ की जाती है रादर दैन अ फीड क्रॉप। 60% जो है वो फीड की तरह यूज़ की जाती है पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक में। 14 से 15% इंडिया की जो मेज़ है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ की जाती है, खासकर स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल, पेपर, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़। और जो है मेज़ जो है वो फीड स्टॉक की तरह भी की जाती है एथेनॉल में। तो IARI जो है उसने इंडिया की फ़र्स्ट वैक्सी मेज़ हाइब्रिड जो है बनाई है, जिसका हाई स्टार्च कंटेंट है। राइस और वीट जो है वो रेजिस्टेंट हैं हाइब्रिडाइजेशन को, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं। लेकिन मेज़ जो है वो क्रॉस पॉलिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हाइब्रिड ब्रीडिंग एक प्रॉफिटेबल एंडेवर बन चुका है। लगभग 80% से भी ज़्यादा जो इंडिया की मेज़ क्रॉप है वो इस टाइम पर हाइब्रिडाइज की जा रही है प्राइवेट सेक्टर द्वारा। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वॉइस बॉक्स प्रोग्राम। टॉपिक गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने नेटफ्लिक्स के साथ हाथ मिलाकर एक अपस्किलिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, जिसका नाम है वॉइस बॉक्स। तो ये वॉइस बॉक्स प्रोग्राम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग देगा वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, खासकर जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती लैंग्वेजेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सभी प्रोफेशनल्स खासकर विमेन के लिए ओपन रहेगा जिनके पास मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है। इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी द्वारा। इसमें ट्रेनिंग होगी, असेसमेंट होगी, 30 कैंडिडेट्स होंगे जिसमें 210 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए जाएंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग द्वारा। और 50% जो ये पार्टिसिपेंट्स होंगे वो विमेन होंगे। ठीक है। तो हर बैच में मतलब 30 कैंडिडेट्स, टोटल 210 पार्टिसिपेंट्स और 50% जो है वो विमेन होंगे। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर 1975 में बनाया गया। और प्लानिंग और प्रमोटिंग जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को करना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन वाटर कन्वेंशन। इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइवरी कोस्ट ने यूएन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया है और 10th अफ्रीकन कंट्री बन चुकी है जिसने
यूएन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया है। यूएन वाटर कन्वेंशन क्या है? इसका असली नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, जिसको हेलसिंकी में 1992 में अडॉप्ट किया गया था। 1996 से ये इन्फोर्स है। एक यूनिक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज को प्रमोट किया जाता है। ओरिजिनली तो ये सिर्फ पैन यूरोपियन रीजन के लिए बनाया गया था, लेकिन मार्च 2016 से इसको सभी यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए ओपन कर दिया गया है। तो इसमें पार्टीज़ को रोका जाता है, पार्टीज़ को कहा जाता है कि वो रोके, कंट्रोल करे, रिड्यूस करे ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट, और ट्रांस बाउंड्री वाटर्स को रीजनेबल और इक्विटेबल वे में जो है वो यूज़ करें वाटर्स उसके, ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट इंश्योर की जा सके। कन्वेंशन किसी बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट को रिप्लेस तो नहीं कर रहा है, बल्कि जो है वो फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो एक पावरफुल टूल है हमारा एस को रियलाइज़ करने का, और यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप जो है वो इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कीर्ति प्रोग्राम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट का एम्बिशियस खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है, जो कि फ्रेश बूस्ट देना चाहता है अंडर न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। तो ये कीर्ति प्रोग्राम स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर एम्ड है, जिनकी एज 9 से 18 के बीच में है। हैंड करना चाहता है ये टैलेंट को फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और स्पोर्ट्स को एज अ टूल यूज़ करना चाहता है ताकि एडिक्शन जो है वो ड्रग्स की उसको कर्ब किया जा सके। कीर्ति जो प्रोग्राम है उसने सॉलिड लॉन्च किया 50 सेंटर्स इन इंडिया में। तो लगभग 20 लाख असेसमेंट्स की गई अक्रॉस द कंट्री। एक एथलीट सेंट्रिक प्रोग्राम है, और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है इसमें, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और डिसेंट्रलाइज्ड और पॉकेट बेस्ड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अप्रोच इसमें फॉलो की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गाया स्पेस क्राफ्ट। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके साइंस एंड टेक के लिए। तो रिसेंटली गाया स्पेस क्राफ्ट जो है वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर चुका है, और अपने मिशन में, जो कि मिशन है कि बिलियन स्टार्स को मिल्की वे में मैप करना। तो गाया स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा दिसंबर 2013 में, और लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ अवे है ये लोकेटेड। मॉनिटर करता है ये ईच ऑफ द टारगेट स्टार्स को लगभग 14 बार हर साल, और थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ये डिस्कवर कर चुका है। लगभग 1 मिलियन डिस्टेंट क्वासार्स को भी ये स्टडी कर रहा है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली प्रिसाइज थ्री डी मैप इसने लगभग 2 बिलियन ऑब्जेक्ट्स का थ्रू आउट आर गैलेक्सी और बियॉन्ड जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is electronics industry in India. This topic is important for your economy section. So Niti Aayog has recently released a report titled Electronics Powering India's Participation in Global Value Chains. And through this report, Niti Aayog is recommending a slew of measures that we can take to grow India's electronics sector from currently $100 billion to $500 billion by 2030. So if we look at the electronics sector in India, then presently India's electronics manufacturing primarily involves the final assembly of electronics goods, and brands and design firms have increasingly outsourcing the uh, assembly, testing, and packaging tasks to the electronics manufacturing services companies in India. But the ecosystem for design and component manufacturing is still at the nascent stage. India's electronics sector has experienced rapid growth, reaching $155 billion in this year, and production has nearly doubled from 48 billion to 101 billion dollar in financial year 2023 as compared to 2017. But this production is primarily driven by mobile phones, which constitute 43% of total electronics production. India has significantly reduced its reliance on smartphone imports, and we manufacture 99% of them domestically. Global electronics market is valued at $4.3 trillion, and it is dominated by countries like China, Taiwan, US, South Korea, Vietnam, and Malaysia. And India currently exports about 25 billion annually, but it is just 1% of the global share, less than 1% of it. Despite we have a 4% share in global demand.
So, what are the various initiatives by the government? 100% FDI has been allowed. PLI schemes have been announced. Semicon India program has been announced. But still, the challenges remain because we have relatively high import tariffs, which leads to higher cost of input parts. An ecosystem for highly complex components like semiconductors does not currently exist in India. We do not have uh, access to the global demand. We have high cost of capital here due to relatively high cost of financing in India. Okay, lack of R&D and D and design ecosystem exists in India. So does this report say? This report say that we should aim for $500 billion in electronics manufacturing by 2030, which would create employment for about 6 million people. But if we continue to have business as usual scenario, then projections indicate India's electronics manufacturing could escalate to $278 billion by financial year 2030. The report has emphasized that we need to scale up production in established segments like mobile phones and also establish our foothold in component manufacturing. To enhance competitiveness, India needs to localize high-tech components. Report has also identified fiscal support to design-focused companies. It also has provided suggestions regarding how we can improve access to skilled labor. There is also a need to develop a mechanism to fast track approvals under for specific proposals where foreign companies are critical for ecosystem development. So the next topic is actions against drug syndicates. This topic is important for your governance section. So while chairing the seventh apex level meeting of NCORD, that is Narco Coordination Center, Union Home Minister has called for ruthless action against drug smuggling syndicates. While addressing the same, he has also launched a toll-free helpline called Manas with the number 1933. So what is Narco Coordination Center? It is a mechanism which was formed in 2016 for better coordination between states and Home Ministry. So it has been further strengthened through a four-tier system in 2019, and NCORD has been established to enhance coordination among various central and state agencies. It is designed to facilitate better communication, cooperation, and intelligence sharing among law enforcement agencies and drug control agencies. So the four-tier structure includes the apex level committee, which is headed by Home Secretary, Executive Level Committee, which is headed by Special Secretary of MHA. Then there is State Level Committee headed by Chief Secretaries and District Level Committees headed by District Magistrates. So, under Article 47 of the Indian Constitution, based on the directive principles, we have already launched the National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, and the state is endeavoring to bring about prohibition of the consumption of drugs except for medicinal purposes. We have also signed the Convention on Narcotics Drugs and the subsequent protocols to it. Even the United Nations Convention against the illicit drugs in narcotics, drugs, and psychotropic substances. So we have also existing laws like the Drugs and Cosmetics Act, the Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances Act, and the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances Act. We have NCP, which was created in 1986 as the nodal agency to fight against this drug menace. Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Social Justice are involved with reducing demand for alcohol and drugs. We are also preventing misuse of dual use drugs. For that, a permanent interministerial committee has been formed. A toll free helpline has recently been launched under the Manas helpline. So, the government is aiming to achieve a drug free India by 2047. Okay. So the next topic is green revolution in maize. This topic is important for your economy and environment section. So India is a success story of the green revolution in maize driven by the private sector because we have achieved maize production tripled triple maize production in the last 20 years due to it. So what is this background of green revolution in India? So the history involves um, Green Revolution, which started in 1960s when high yielding rice and wheat was introduced to increase food production. So it was a period during which agriculture in India was converted into a modern industrial system by the adoption of technology like the use of high yielding uh, variety of seeds, mechanized farm tools, irrigation facilities, pesticides and fertilizers. It was mainly led by agricultural scientists
MS Swaminathan in India. Okay, so what is the impact of green revolution? So crop varieties can be chosen by breeding for a variety of beneficial traits. It also resulted in an increase in food grain production, but the criticism involves that it increased the input cost, which resulted in the indebtedness of small farmers. Environmental damage was witnessed because of excessive and inappropriate use of fertilizers and pesticides, and it led to increased regional disparities because green revolution was confined to the areas where irrigation uh, had a high potential. So it was largely limited to wheat and rice crops only. Okay, so if we look at the green revolution in maize, then in maize India is the crop of maize is grown principally in two seasons. Kharif maize represents 83% of the maize area in India as compared to the Rabi maize. India ranks fourth in area and seventh in production of maize, and annual production of maize has been tripled in the last 20 years. Maize is a fuel crop rather than a feed crop. 60% of it goes for feed, as for poultry and livestock. 14 to 15% of India's maize utilization is for industrial purposes. Starch has application in textile, paper, pharmaceutical, food and beverage industries, and the usage of maize as a feedstock for ethanol is made for mixing it with petrol. Okay, so new varieties of maize have also been founded by or made by the IARI, and India's first waxy maize hybrid with high starch content has been made by IARI, which is better suited for ethanol production. So we all know that rice and wheat are resistant to hybridization because they are self-pollinating plants, but maize has the ability to cross pollinate, which makes hybrid breeding a profitable endeavor. That's why more than 80% of India's maize crop is hybridized by the private sector. So the next topic is the Voice Box program. This topic is important for your social issues. So National Film Development Corporation has joined hands with Netflix India to launch an upskilling program for voiceover artists in India called the Voice Box program. So this program will offer recognition of prior learning training to voiceover artists, focusing on English, Hindi, Marathi, Bengali, Malayalam, Tamil, Telugu, and Gujarati languages. This program is open to professionals, preferably women, with more than 2 years of experience. It is sponsored by the Netflix Fund for Creative Equity. It would include training and assessment, and each batch would accommodate up to 30 candidates with a total of 210 participants selected through the preliminary screening, and at least 50% of them will be women. What is National Development Film Development Corporation? It is a public sector enterprise under the aegis of MIB, or the Ministry of Information and Broadcasting. It was launched in 1975 with the objective of planning and promoting an organized, efficient, and integrated development of the Indian film industry. So the next topic is UN Water Convention. This topic is important for your environment section. So recently, Ivory Coast has joined the United Nations Water Convention, becoming the 10th African country to do so. What is UN Water Convention? It is also known as the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, and it was adopted in Helsinki in 1992, but it came into picture or into force in 1996. So it is a unique legally binding instrument which promotes the sustainable management of shared water resources. It was originally meant for European countries, but since March 2016, it has been opened for all UN member states. It requires parties to prevent, control, and reduce transboundary impact, use transboundary waters in a reasonable and equitable way, and ensure the sustainable management of them. So, as a framework agreement, the convention does not replace bilateral or multilateral treaties, but it has become a powerful tool to promote and operationalize the achievement of the SDG agenda. So the UN Economic Commission for Europe services this UN Water Convention. So the next topic is Kirti program. This topic is important for your governance section. So the government's ambitious Khelo India Rising Talent Identification program is set to get a fresh boost under the new Union Minister of Youth Affairs. What is this program? This Kirti program is aimed at school children between 9 and 18 years of age group. This scheme will
have two main objectives, that is to hunt talent from every nook and corner of the country and to use sports as a tool to curb addiction towards drugs and other gadgetry distractions. So Kirti has made a solid launch across 50 centers in India. It is aiming to conduct 20 lakh assessments across the country. So its athlete centric program is conspicuous by its transparent selection methodology based on information technology. It has a decentralized and pocket based talent identification approach, which is helping in achieving the twin objectives of Khelo India scheme, that is excellence in sports and mass participation in sports. So the next topic is Gaia spacecraft. This topic is important for your science and tech section. So recently, Gaia spacecraft has faced and overcome significant challenges in its mission to map over a billion stars in the Milky Way. So Gaia spacecraft was launched by the European Space Agency in December 2013. It is located 1.5 million kilometers away from Earth, and it monitors each of the target stars about 14 times per year, and it is expected to discover hundreds of thousands of new celestial objects. The mission is also studying more than 1 million distant quasars and providing stringent new tests of Albert Einstein's general theory of relativity. It is creating an extraordinarily precise 3D map of nearly 2 billion objects throughout our galaxy and beyond. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics on with new topics. Until then, goodbye and take care.